यूट्यूब वगैरह का। Okay, female reproductive cycle है. These are the whole sequences that are going to take place during the female reproductive cycle. Yesterday हमने discuss किया था कि there are various hormones that are working during the female reproductive cycle, and those hormones are, some of them are secreted from the central nervous system, जिसके अंदर आपके पास under the control of the hypothalamus having an impact on the pituitary gland है, जिसमें से mainly follicle stimulating hormone and luteinizing hormone जो है ये मेन इम्पैक्ट हार्मोन्स हैं, ठीक है. सम ऑफ देम आर गोइंग टू बी सिक्रेटेड बाय द ओवरी, ठीक है. इनमें से कुछ हमारे पास जो है वो ओवरी में सिक्रेट हो रहे हैं और कुछ हमारे पास जो है वो फिर इनसाइड द फॉलिकल्स, फ्रॉम द फॉलिकल्स दे आर गोइंग टू बी सिक्रेटेड. नाउ दिस इज अ जनरल प्लान, अ जनरल समरी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है. दोबारा से एक दफा देख लेते हैं. हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड आर gonadotrophic releasing hormone, which is secreted from the hypothalamus, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, which are secreted by the anterior lobe of the pituitary gland under the impact of the gonadotrophic releasing hormone. ये याद रखिए इस बात को. Follicle stimulating hormone and luteinizing hormone are secreted from the anterior lobe of the pituitary gland, and इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसका impact अब directly it is going to pass into the blood, and via the blood stream it is going to reach the ovaries. Inside the ovary it is going to have an effect on the ovary, and ovary में specifically किस चीज के ऊपर effect होगा? सबसे पहले the effect is going to be on the follicles, follicle stimulating hormone, follicles के ऊपर इसका impact होगा, ठीक है. follicles के ऊपर impact होगा, और follicles के ऊपर impact होने के बाद क्या है, the follicle will start to grow, ठीक है, याद रखिए. follicle will start to grow, and more than one follicle is going to grow. Keep your books in front of you, keep your notebooks in front of you. More than one follicle, because this is a hormone, follicle stimulating hormone, it has an impact on the follicles, ठीक है, and on generally on all the follicles. So these follicles, they are going to start to grow. Now when these follicles are going to start to grow, what happens? Some follicles will stay behind, and some follicles, they will grow larger in size. And the strongest follicle, which is known as the Graafian follicle, okay? It is known as a Graafian follicle, or it is known as the mature follicle. The Graafian follicle is known as the mature follicle or the vesicular follicle, ठीक है. mature follicle, vesicular follicle, ये बन जाएगा. vesicular follicle is going to start to secrete another hormone which is known as estrogen. याद रखिए, vesicular follicle is going to secrete the hormone, the Graafian follicle, which is going to secrete the hormone which is the estrogen. बाकी जो follicles हैं वो क्या हैं? They will be called the follicle atresia. Follicle atresia, underline these words in your book. Follicle atresia क्या करेंगे? Follicle atresia gradually जो है वो diminish होते जाएंगे. अब yesterday I told you कि inside the female ovary 500 ready follicles are present, which will develop under the impact of the follicle stimulating hormone, ठीक है. under the impact of the follicle stimulating hormone ये develop होंगे. तो follicle stimulating hormone जो है, it is going to develop the different follicles, and आपके पास जो strongest follicle होगा, that is called the Graafian follicle, vesicular follicle या mature follicle. It will, the mature follicle, only the mature follicle is going to start to produce estrogen, and the rest of the follicles that were developing वो weak हैं, वो क्या होंगे? वो diminish हो जाएंगे. They are known as the follicle atresia, ठीक है. उनको हम कहते हैं follicle atresia. तो वो diminish हो जाएंगे. Now estrogen that is going to be produced, it has two functions. First of all, estrogen जो है, it
helps the maturation of the egg. Now the egg has grown. Now the egg has to mature. Maturation of egg क्या है? Completion of meiosis 1, starting of meiosis 2, arresting the meiosis at metaphase 2. This is the extent of maturation that is going to take place with the help of estrogen. ठीक है, number 1 तो ये है कि it brings the egg from prophase 1 up to metaphase 2. लिख लीजिए ये बातें बेटा, सारे लिख लीजिए बेटा, आप लोग मेरे सामने नहीं है, लेकिन चलो खैर है, मुझे तसल्ली है कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और आप लोग बहुत आराम से बात मानते हो. ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है एस्ट्रोजन का वो क्या है कि इट स्टार्ट्स टू बिल्ड अप द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. यूट्रस के मैंने आपको बताया था कि 3 लाइनिंग्स होती हैं, ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में भी. Myometrium, outermost, perimetrium, outermost, myometrium, central, muscular layer, endometrium, inner lining, which is lined up every month and it sheds off during the menstrual flow. Menstrual flow क्या चीज है? It is the breakdown of the endometrium in the case of non-fertilization. Now the function of estrogen क्या है? Maturation of the egg and release of the egg with the help of luteinizing hormone. Now release of the egg बेटा याद रखिए, release of the egg जो है it does not take place individually with estrogen. Luteinizing hormone is the main ovulation enzyme. Hormone. Luteinizing hormone क्या करता है? Luteinizing hormone help करता है release of the ovum from the follicle. ठीक है, एस्ट्रोजन मैच्योरेशन में हेल्प करता है. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको उसके अंदर से रिलीज करता है. सडनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? इट हेल्प्स द ओवम टू बी रिलीज फ्रॉम द फॉलिकल एंड देन the luteinizing hormone converts the covering of the follicle. After the egg has been released, it converts the remnants of the follicle into corpus luteum. Corpus luteum में उसको ये convert करता है and then the corpus luteum starts to produce progesterone. Progesterone भी कह सकते हैं, progesterone भी कह सकते हैं. Now the already lined uterine lining में अब now progesterone, what is it going to be? Going to maintain the uterus lining. It is going to increase the glandular lining. It is going to secrete various type of cells. It is going to add on more membranes inside the lining. It is going to thicken the lining of the cells. New temporary glands इसके अंदर increase होंगे because आपको पता है कि now placental setting and all these things को देखना है. In case of fertilization, if fertilization takes place, okay, HCG is going to be produced, corpus luteum will be maintained until placenta established हो जाए. If pregnancy is not taking place, has not taken place, then corpus luteum will degenerate and blood flow is going to take place. Now keep one thing in mind. Inside the ovary, we have a different cycle which is operating, and that is the ovarian cycle. ठीक है, उसको हम कहते हैं the ovarian cycle. Inside the uterus, we have a different cycle operating which is called the uterine cycle. फिलहाल इनको आप लिख लीजिए, ovarian cycle, uterine cycle. Ovarian cycle क्या है? Ovarian cycle involves all the changes that are taking place inside the ovary during the reproductive cycle. Now, part of changes are those that are taking place during the phase when the egg is present inside the follicle. That is called the follicular phase. Then part of the phase is that one that is taking place in the ovary after the release of the follicle. That is called the luteal phase. ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया ल्यूटियल फेज. अब देखिए यहां पर जो हमें नजर आ रहा है, दिस इज द फॉलिकुलर फेज in which we have a different concentration of hormones, in which we have a different behavior of the ovary, in which we have the different behavior of the follicle. The follicle produces estrogen during the follicular phase. The growing of the follicle is going to take place after ovulation. ये देखिए, this is ovulation.
ठीक है. The cycle inside the ovary is now going to be converted to luteal phase. Luteal phase क्या चीज है? जब corpus luteum बन जाता है and then hormone चेंज हो गया है. आपके पास अब हार्मोन क्या है? आपके पास अब हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन है, which is going to be produced by the corpus luteum. This is the anterior part of the जो है the oviduct, the fallopian tube. इसके proximal region में fertilization होती है. Proximal region का मतलब क्या है? लिख लीजिए इस बात को. Proximal region का मतलब है start, beginning. After the release of the ovum from the follicle, the egg remains alive for only 12 hours. The eggs remain alive for only 12 hours. In that case, if there are sperms present inside the uterus and inside this area, क्योंकि chemotaxis की वजह से sperms they swim towards the egg. ठीक है? If the sperms are present, then fertilization has to take place within those 12 hours. The life of the sperm inside the female reproductive tract is 48 hours. ठीक है, मतलब 48 आवर्स तक स्पर्म्स जो हैं वो जिंदा रह सकते हैं. And due to chemotaxis, if the egg is released and sperms are already present inside the uterus, then the sperms are going to swim and then they are going to come over and going to fertilize the ovum. But in case when the sperms reach the ovum has died, ओवम की लाइफ 12 आवर्स से ज्यादा हो गई है और ओवम जो है वो वायबिलिटी खत्म हो गई है, तो फिर क्या होगा? तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, स्पर्म्स भी जाया हो जाएंगे एंड जो ओवम है वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ जो है वो निकल जाएगा. यहाँ पर जो है ओवुलेशन इट टेक्स प्लेस इन द मिडिल ऑफ द साइकिल on day 14. The average menstrual cycle or reproductive cycle of the female is 28 days. About day 14 में on average यहाँ पर रिलीज होता है और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में आपके पास 14 डेज और लगते हैं on average. तो about ये है कि about 28 days का जो है ना ये आपके पास जो है वो होता है. Now stages of the reproductive cycle हमारे पास क्या है? Ovulation क्या है? Most of the time one ovum is released at a time. The ovum passes into the fallopian tube and then it passes to the uterus. From the ovum to the fallopian tube and from the fallopian tube to the uterus, this area, fallopian tube to the uterus, it takes about 14 days. Fertilization takes place in the proximal part of the oviduct. Oviduct is also known as the क्या कहते हैं fallopian tube. ठीक है, it is also known as the fallopian tube. ठीक है, अब क्या होगा? अब हम देखते हैं कि आपके पास जो stages हैं inside the ovary and inside the uterus वो क्या है? Implantation of the zygote takes place in the uterus and then development of placenta takes place. Excretory and reproductive openings are separate in female. ये बहुत important क्योंकि lower animals के अंदर क्लोएका होता है, CLOACA, क्लोएका. ठीक है, बोर्ड पे जाती हूँ अभी, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए. क्लोएका जो है वो आपके पास मैमल्स के अंदर नहीं. ठीक है, मैमल्स में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग डिफरेंट है, यूरिनरी ट्रैक्ट की ओपनिंग डिफरेंट है फीमेल्स में. मेल्स के अंदर क्या है? मेल्स के अंदर यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट है. Female reproductive cycle, egg production, a cyclic activity in females. We are going to study, but we are studying the reproductive cycle of the humans. It shows a periodic reproductive cycle of an average of 28 days, which is also called as a menstrual cycle. It involves changes in structures and functions of the reproductive system. Menstrual cycle involves the ovarian cycle and the uterine cycle, which is regulated by gonadotrophins. Where are gonadotrophins produced? From where are gonadotrophins produced, beta? और ये लोग जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, इनको आप बोलें कि क्लास में आए. What is the gonadotrophin? किन हार्मोन्स को हम gonadotrophins कहते हैं? जी बच्चे.
Gonadotrophins are actually those hormones that help in the growth of the reproductive cells, and these are produced from the क्या कहते हैं hypothalamus. ठीक है, आगे चलो. Gonadotropic releasing hormone था ना, steps in the reproductive cycle. Follicle stimulating hormone from the pituitary. पूरी समरी आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, अच्छे से बच्चों की तरह इसको याद बस करेंगे, ठीक है, और बेहतरीन से मेरे लिए नंबर आप लोग लेंगे और मुझे खुश करेंगे. Follicle stimulating hormone from the pituitary, it helps in the formation of the follicles. All the follicles degenerate, ठीक है, and that is follicle atresia except one, and that except one is known as the Greffian follicle or the mature follicle. The ovary produces estrogen. When estrogen is produced, ये बहुत important बात है, ये inhibit कर देता है follicle stimulating hormone की secretion को, and vascularizes the endometrium. Inhibits follicle stimulating hormone secretion and vascularizes the endometrium. आपको question आ सकता है, discuss the controls of the female reproductive system. बस अब इसमें आपने क्या लिखना है? Describe the controls of the female reproductive system. क्योंकि if pregnancy takes place, the reproductive system stops. Once the follicle is matured, the stimulation by the follicle stimulating hormone stop हो जाता है. अब इन चीजों के लिए क्या है? इन चीजों के लिए आपको पूरा एक माइंड मैप बनाना है, आपको एक फ्लो शीट, एक स्केच बनाना है, जिसके अंदर हमने हार्मोनल इंपैक्ट्स देखने हैं कि कौन से हार्मोन जो है वो कंट्रोल. नाउ एस्ट्रोजन इज द फर्स्ट कंट्रोल ऑन द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एस्ट्रोजन ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सबसे पहले कंट्रोल करना है. उसने उसको रोकना है फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल. एंड इन केस के प्रेगनेंसी हो गई है, देन प्रोजेस्टेरॉन ने इसको पक्का बंद कर देना है. कब तक? अंटिल द गेस्टेशन पीरियड जो है वो कंप्लीट ना हो जाए. Luteinizing hormone from the pituitary induces ovulation. Estrogen inhibits follicle stimulating hormone, vascularizes the endometrium, and promotes the growth and maturation of the egg. Releasing of the egg or the ovum from the follicle is the duty of the pituitary, of the luteinizing hormone, which is produced from the anterior lobe of the pituitary gland. Corpus luteum, a yellow glandular mass. It secretes progesterone and prepares the uterus for implantation. Further preparation of the uterus. ग्लैंड्स की सिक्रेशन होती है, मेम्ब्रेन्स की डेपोजिशन होती है, और पार्शियल जो है वो कैपिलरीज की डेपोजिशन होती है, ऑयल्स की डेपोजिशन होती है, वेरियस काइंड्स ऑफ सिक्रीशंस, प्रोटीन्स की डेपोजिशन होती है, which are going to support the formation of placenta, which are going to support the implantation, and which are going to initially support the baby until the baby has established a contact with the mother. ये देखिए, अब ये आपके पास हैं आपके फेजेस. मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज, फिर प्री. मैंने कल आपको कहा था कि 4 फेजेस होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 लिखे हुए. प्री मेंस्ट्रुअल फेज. अब सबसे पहले डेज देख लें. मेंस्ट्रुअल फेज, the start of the menstrual cycle to 4 to 5 days. That is when the breakdown is taking place. That is the first day of the next reproductive cycle. The last day of the previous reproductive cycle. लिख लीजिए इस बात को. The last day of the previous reproductive cycle is the first day of the next reproductive cycle. Start of reproductive cycle का मतलब है कि पिछला reproductive cycle जाया हो गया, breakdown हो गई uterus lining. अब वो पिछले का जो गंध है वो तो it is going to be removed in the form of menstrual flow, but यूट्रस के अंदर, ओवरीज के अंदर दूसरा काम शुरू हो गया. डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इज गोइंग टू स्टार्ट एंड यूट्रस में क्लीनिंग ऑफ द यूट्रस हैज स्टार्टेड इन द यूटेराइन साइकिल. ठीक है. द फर्स्ट फेज इज द मेंस्ट्रुअल फेज. द नेक्स्ट इज द proliferatory phase in which estrogen is the main enzyme.
ठीक है, and estrogen is going to increase the lining of the uterus. एस्ट्रोजन क्या करेगा? एस्ट्रोजन विल इंक्रीज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ठीक है, और एस्ट्रोजन क्या करेगा? इसमें लाइनिंग को इंक्रीज करके इसमें मुख्तलिफ किस्म की कैपिलरीज जो हैं दे आर गोइंग टू बी इंक्रीज. देन दिस इज द ग्रेफियन फॉलिकल. This Geffen follicle is going to release the egg under the action of the luteinizing hormone. This is around day 14. This is the proliferatory phase. Once the proliferatory phase ends, the next phase is a secretory phase in which glandular formation is going to take place. यहाँ पर glands बनने शुरू हो जाएंगे. किसकी वजह से? इसकी वजह से, corpus luteum. Corpus luteum ने प्रोग्रेसोरॉन प्रोड्यूस करना है एंड ये मेम्ब्रेन्स जो है दे आर गोइंग टू बी थिकन. बेटा एक एक लफ्ज लिखा करें, ठीक है, आपको क्लास में बहुत अच्छे से मैं लिखवाती हूँ लेकिन मजबूरी है एक एक लफ्ज, लेकिन बेटा आप लोग लिखा करें बिकॉज आई विल नॉट रिपीट दीज टॉपिक्स. हम कोर्स कंप्लीट करके फिर रिविजन जब स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं ये टॉपिक्स आपको दोबारा पढ़ाऊंगी. नाउ फिर उसके बाद नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट इज 26, 27, 28, 29, 30 डे पे जाहिर है इम्प्लांटेशन हो जाती है. बाय दैट टाइम इफ इम्प्लांटेशन डज नॉट टेक प्लेस, ब्रेकडाउन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज टेकिंग प्लेस, प्रोजेस्टेरोन लेवल्स आर फॉलिंग डाउन, ठीक है. प्री मेंस्ट्रुअल फेज में द यूट्रस स्टार्ट्स टू शट ऑफ, डिफरेंट प्लग्स, डिफरेंट ऑयल्स, डिफरेंट जो यूट्रस के अंदर जो मटेरियल्स हैं दे स्टार्ट टू फ्लो आउट until the breakdown of the tissue, जिसकी वजह से फिर release of the whole membrane वो start हो जाता है. No fertilization, the corpus luteum degenerates, endometrium breaks down, discharge of blood and cell debris called menstruation takes place. अब देखिए pre-menstrual phase है और इसका जो menstruation phase है वो नेक्स्ट का फर्स्ट डे है. यहां पर ये खत्म हो गया. इसका जो ये वाला फेज है बेटा, इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है. द साइकिल repeats itself every 28 days. Complete stoppage of the cycle is called menopause. Menopause is actually the that age at which the females become reproductively inactive. On an average 55 to 60 years की एज है जिसमें फिर उनका menstrual cycle बंद हो जाता है. That is called menopause. Menarche, MENARCH, menarche. ये बोर्ड पे लिखती हूँ मैं सारा कुछ. Menarche is actually the beginning of the reproductive cycle, the age of puberty. ठीक है. मेनार्च होता है स्टार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेनोपॉज होता है एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल. इन दोनों के दरमियान में आपके पास क्या है? इन दोनों के दरमियान में आपके पास रिप्रोडक्टिव एज है. नाउ लुक हियर, डे 1 to day 7 menstrual cycle, day 8 to day 14 the lining of the womb thickens in preparation for the egg. Womb क्या है? यूट्रस को कहते हैं. Endometrial lining के यूट्रस को कहते हैं. After ovulation, if fertilization has not taken place, the corpus luteum fades away. The uterine cycle detaches, leading to menstruation. दोबारा से शुरू हो. ये आपके पास एक पाई चार्ट की सूरत में जो है वो डे वाइज बना हुआ है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट slide देखते हैं. Now this is a very important slide, the phases of the reproductive cycle. Menstrual phase, proliferatory phase, secretory phase, follicular phase in the ovary, luteal phase in the ovary after ovulation. In the uterus, menstrual cycle, proliferatory cycle, secretory phase. ये uterine phases हैं. These are the uterine phases and these are the ovarian phases. ये पूरा जो है ये reproductive phases हैं. कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. ओवरी के अंदर follicular phase, luteal phase. यूट्रस के अंदर menstrual phase, proliferatory phase, secretory phase.
Now, when menstrual phase is taking place, this is the concentration of the hormones. Progesterone, low level. Estrogen, low level. Luteinizing hormone, follicle stimulating hormone are starting to build up because the next follicle is going to start to develop. Now, in the proliferatory phase, estrogen shoot up कर गया, ठीक है, एस्ट्रोजन शूट अप कर गया. अच्छा, ये ब्लैक वाला बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये पर्पल वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसमें गलत है, इसको ठीक कर लीजिए अपने पास. नाउ बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखिए नीचे हो गया बेटा, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसमें लेबल गलत हुआ है, ये आप अपने पास ठीक कर लें. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉल्स डाउन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सर्ज आ जाती है और इस सर्ज की वजह से ओवुलेशन हो गया, स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अब क्या है, एग रिलीज हो गया, एस्ट्रोजन फॉल्स, क्या चीज बढ़नी शुरू की, देखें प्रोजेस्टेरोन, ये कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से. और ये सिक्रीटरी फेज, डिजनरेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिंग, ये सारा कुछ फॉल हो रहा है, ब्लड रिलीज हो गया. और यहाँ पर देखें ब्लड में हार्मोनल कंपैक्ट क्या है और यूट्रस के अंदर बिहेवियर जो है ये हमारे पास क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए. नाउ यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिए, आपके पास एंडोमेट्रियल लाइनिंग में चेंजेस, ब्लड में चेंजेस, बहुत अच्छी स्लाइड है, ओवेरियन साइकिल में चेंजेस, हार्मोनल बिहेवियर, पिट्यूटरी ग्लैंड है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, progesterone, estrogen, developing follicle because of the follicle stimulating hormone. Follicular phase है, mature follicle along with the increase in the concentration of the estrogen, grafting follicle हो गया, ठीक है. Now surge of luteinizing hormone coupled with the release of the ovum and surge of estrogen भी है. एंड यूट्रस जो है वो ब्रेकडाउन होके इतना लाइनअप जो है वो हो चुका है, ठीक है, यूट्रस की इतनी लाइनिंग होगी भी है, कॉइलिंग अभी नहीं हुई है, ग्लैंडुलर कॉइलिंग एंड मेम्ब्रेनस कॉइलिंग अभी नहीं हुई, लेकिन मेम्ब्रेन्स एंड कैपिलरीज लाइनअप होगी. नाउ ये निकल गया, अब आप देखें एलएच भी बंद, एलएच ने कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करना है, एलएच बंद, FSH बंद बिकॉज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, एस्ट्रोजन फॉल्स डाउन, प्रोजेस्टेरोन हाई. फॉलिकुलर फेज के बाद ल्यूटियल फेज है, यहाँ पर सिक्रीटरी फेज है, हाई बिल्डअप ऑफ द मेम्ब्रेन इन केस ऑफ नो फर्टिलाइजेशन, FSH अपना क्या नाम है HCG नहीं होगा, ये बंद होता जाएगा, ये खत्म हो गया. जब ये खत्म हो गया तो फिर आप देखेंगे दिस इज गोइंग टू बी द breakdown of the uterine lining and the next reproductive cycle यहाँ पर क्या है बेटा स्टार्ट हो गया, ठीक है. आई होप कि समझ आ गई होगी आप लोगों को. ये देखिए दोबारा से ये एक और तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ. फर्स्ट फेज क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज है. नेक्स्ट आपके पास ये देखिए डेवलपिंग इनसाइड द यूट्रस की लाइनिंग, देखिए ये कैसे डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है. दीज आर द डेवलपिंग follicles, the primary oocyte. Primary oocyte में बेटा आप देखें कि primary oocyte के अंदर the primary oocyte is going to complete meiosis 1 and going to enter meiosis 2. During ovulation, keep it in mind that during ovulation, the ovum is at which stage? It is on the stage of metaphase 2. एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये मेटाफेज 2 में ही इट इज गोइंग टू बी वेस्टेड. बट इन केस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फिर क्या होगा बेटा, फिर ये होगा कि ये जो है गेस्टेशन पीरियड इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, प्रेगनेंसी हो जाएगी, कंसेप्शन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग इन द यूट्रस. ये दो डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है. नाउ इस तरीके से देखें, अलग अलग तरीकों से आप लोगों को मैंने ये बना दिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. यूट्राइन साइकिल है, ओवेरियन साइकिल है, इनसाइड द ओवेरियन साइकिल फॉलिकुलर फेज है, ल्यूटियल फेज है, ठीक है.
अब देखें ये डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स हैं, रिलीज हो गया, दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम। साथ साथ देखें यहाँ पर द यूट्रस वाज फिल्ड अप विद ब्लड, दिस इज द रिलीज ऑफ द ब्लड व्हिच इज द मेंस्ट्रुअल फ्लो। फिर ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज इसकी बिल्डअप शुरू हो गई है विद एस्ट्रोजन, बाय द टाइम एस्ट्रोजन बन गया, रिलीज ऑफ द एग में हाफ वे थ्रू डेवलपमेंट है। प्रोजेस्टेरोन increases the development and glandular nature इसकी और भी ज्यादा जो है, it makes it even stronger। ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन, हाइपोथैलेमस, anterior pituitary, follicle stimulating hormone, gonadotropin releasing hormone, यहाँ पर आ गया। Progesterone, what is it in the luteal phase? Steroid sex hormone, corpus luteum produces it after ovulation. Placenta produces it after 5 to 10 weeks. Function इसका क्या है? It thickens and maintains the endometrium and it thickens the cervical mucus. बहुत important बात है। Function of progesterone. Introduce progesterone. Why is progesterone so important? ठीक है, ये slide है। Describe the hormonal controls of the reproductive system. Why does the reproductive system become inactive after pregnancy? ठीक है, what stops the fertilization? What stops the development of more than one follicle inside the ovary in normal situations? These are all hormonal controls. आपको ये आंसर्स मिल सकते हैं, ये भी वही चीज है। ठीक है, एक अलग तरीके से कि किसी तरीके से आप लोगों को जो है ना ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। डिसऑर्डर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा हम कल करेंगे, ठीक है, और कल इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ लीजिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ।